चलिए let us start है ना. Now we have seen that when we have something like this, then and we treat this with HBr. In dark, we get more substituted haloalkene as the major product. And when we do the same reaction in the presence of HBr in the presence of peroxide, then we get 1 degree alkyl halide as the major product. Now these two, they have different rules attached to it. Okay. So the first one, it occurs via a Markovnikov's rule. And the second one, it occurs via peroxide effect or anti-Markovnikov rule. Anti-Markovnikov rule. So I told you guys how to write the product, but ये हमने लिखाया तो नहीं है ना आप लोगों को Markovnikov and anti-Markovnikov. Just give me a second. So please write Markovnikov's rule. So what does Markovnikov rule says? It says symmetrical alkene. Please write with me. When unsymmetrical alkene reacts with unsymmetrical reagent. यहाँ पे reagent क्या है? HX. ठीक है. Unsymmetrical reagent. Then the negative part of the reagent attaches to that carbon. Attaches to that carbon which has lesser number of hydrogen. ठीक है. So as you can see, this carbon atom, it has 1 hydrogen, and this carbon atom, it has 2 hydrogen. So the Br, which is in the negative part, na, अगर हम HBr की बात करें तो Br will be delta negative and H will be delta positive because bromine is more electronegative. It will be pulling electrons from the hydrogen, right? So the negative part is attached on which carbon? The carbon which is having less number of hydrogen. This is the this one is the Markovnikov's rule. The next one is known as, it has different names, है ना? So क्या क्या नाम है इसका? It has one name which is peroxide effect. Peroxide और इसे मिलती है और खराश effect, or it is also known as anti-Markovnikov rule. Anti-Markovnikov rule. Fine. Now, what is it? This rule says, it says that in the presence of peroxide, so the reagent will always be unsymmetrical in this case, right? हाँ, reagent unsymmetrical रहेगा. HX के केस में सिर्फ H ना, HX हो गया, H2O हो गया. ठीक है. तो H2O में भी क्या होता है? HOH होता है. ठीक है. बट वो रिएक्शन बाद में आएगा, एडिशन ऑफ वाटर, बट इट विल बी ऑलवेज अनसिमेट्रिकल. और जहां पे सिमेट्रिकल रिएजेंट आ जाए, जैसे एच आ जाए, तो इसमें तो फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, एक कार्बन में हाइड्रोजन, दूसरे में भी हाइड्रोजन. ठीक है. नो, you see, in the presence of peroxide, the Br attaches to that carbon
which has more number of hydrogens. Which has more number of hydrogens. आलिया आप थोड़ा टाइम से आया करें एंड सारा आप रेगुलर आया करें. यू आर प्रेजेंट one day, you are absent another day. Yes, Alia. Alia, I'm sorry. Yes, Sarah. Sarah, you're present one day, you're absent the other. Sir, my exams are going on. So are you watching the lectures? Yesterday's I didn't watch till now, magar the other ones I did. Okay, fine. So the next reaction of alkene is ozonolysis. So in ozonolysis, what would happen? You have carbon with double bond carbon, and there are two groups attached on each carbon atom. When you react this with first step with ozone, that is O3. The second step, you react this with ZnH2O. Then this bond breaks. You get one oxygen here and the other oxygen here. See how you have to write the product, please see. This carbon as it is, the two groups which are attached as it is. Okay. When I am saying as it is, that is also important that you write the groups as it is. Then the double bond and oxygen. Plus, as you can see here, double bond carbon, the two groups as it is, and there will be oxygen like this. So you need to cut the double bond and then just add oxygen there. You don't have to do anything else. So for example, if you have CH2, double bond CH2. In the first step, you have ozone O3 in the presence of zinc H2O. So here what you will do, you will break this bond like this, oxygen and oxygen. Right. So what are the two groups attached on this first carbon atom? There are CH2. That will be having a double bond with oxygen, plus the second one will also be oxygen with a double bond CH2 as it is. As you can see, both of these compounds are same. So either writing this, you can just write 2 moles of, you will get CH2 double bond O. Now, what is CH2 double bond O? That is carbon with oxygen and 2 hydrogens. So this is methanol. Okay, or formaldehyde is also the common name. Now, if you have something complicated also, then you don't have to worry. See, you trust the process, okay? You guys trust the process. For example, if you have something like this, fine, and you react this with first step is ozone, second step is zinc H2, है ना? Previously, as previous case. यहाँ पे भी आपको बस वही same process है. Process पे please trust कीजिए, nothing else. You break this bond, oxygen here and oxygen here. So here you have two carbon atoms, double bond, oxygen, plus here you have double bond, and the two carbon atoms are as it is. So this is double bond O. Now, if you try to write, both of these structures are same, two carbon atoms, and then you have double bond O. It is basically carbon, which is CS3. Then you have carbon, which is having double bond O, and it will have one hydrogen. So you can see this is ethanol. Fine. Now let us suppose you have something else. You have something like this. Same reactants, ozone and water. So we'll break this, oxygen and oxygen. So for the first one, you can see that you have something like this and double bond O plus double bond, the two carbon atoms and O. If you write this product properly, this will be what? CS3 and CS3. And this will be CS3 and this is CHO. Okay.
So this is, you can see that this is a ketone, this is an aldehyde. So in all these structures, you will either get an aldehyde or a ketone. Okay, so please write this down. Ozonolysis. Raise your hand once you're done. Fine. और if you're done, see. So एक तो आपके पास सिंपल सवाल जो आते हैं वो क्या होंगे? They will give you the reactant. You will have to write down or draw the products. ठीक है? So please see. Now here what they are asking. Write the IUPAC names of the products obtained by the ozonolysis of following. ठीक है? So आपको Pent2-ene का ozonolysis करना है, उसके बाद उसका whatever product you are getting, you are going to write the name of that product. ठीक है? So let us see. अच्छा, इसमें से कौन सा हम कर दे, जरा बताइए तो जरा. Tell me which one should I do? 1, 2, 3, 4 में. The fourth. First one. Fourth one. Fourth one. Fourth one. 1-phenyl butene. ठीक है. Phenyl is benzene ring. Fine. And then you have butene. So phenyl is attached with 1, 2, 3, 4 carbon atoms, है ना? वो किससे अटैच है? ब्यूट से अटैच, राइट? सो बेसिकली चलिए हम आपको बताते हैं पहले कैसे लिखना रहता है इसको. सबसे पहले व्हाट यू विल डू, यू विल आइडेंटिफाई द पेरेंट चेन हियर. सो पेरेंट चेन क्या है यहाँ पे? ब्यूट है. तो ब्यूट मींस यू विल हैव 1, 2, 3, 4 carbon atoms. Then it is saying that the first carbon atom is attached with phenyl. So you will just add phenyl group, that is the benzene ring. अब देखिए बेंजीन रिंग तो हमने यहाँ पे बनाया है, बट you don't have to write the benzene ring. You can just write PH. That would be fine. Then you see that there is a double bond, and that double bond is also on the first carbon. So first or second carbon के बीच में double bond होगा. That will be like this. Here you will have a double bond. Then you will break this. और एक ऑक्सीजन यहाँ और दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पे, right? So here you will get, if you look at the first structure, it is PH, this benzene ring. Then you have carbon atom which has double bond O. So it will be rather what? CHO. है ना? ऐसे तो है. ये हम आपको पूरा ही बता देते हैं. ऐसे बना लीजिएगा आप डबल बॉन्ड O और यहाँ पे PH है. ठीक है? तो दिस कार्बन एटम इज हैविंग ओनली डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सो देयर इज नथिंग एल्स. दैट मींस यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा. ठीक है? सो यू कैन राइट दिस और यू कैन जस्ट राइट व्हाट? और PHCHO प्लस what is remaining here? 1, 2, 3 carbon atoms. 1, 2, 3 carbon atoms, and the third carbon atom is having double bond O. So it is not, it is rather what you can write 1, 2, 3. It will be 1, 2, 3, and this is having CHO. What is the name of this particular compound? So benzene with CHO group, it is known as benzaldehyde. Benzaldehyde. This is 1, 2, 3 carbon atoms. So it is prop, ane, and ul. Okay, now you can write 1 ul. That will be the name. Okay, this is the fourth one. So try this and send me the answer. Now Pent2-ene तो कम से कम आना चाहिए. Draw the structure. First of all, draw the structure on your notebook and then send the structure of Pent2-ene. ठीक है? उसके बाद reaction. Then I will tell you guys whether it is right or wrong. पहले Pent2-ene बनाइए,
उसके बाद सेंड इट टू मी। डोंट वेस्ट टाइम, बट ठीक है ना, अगर आपने एक बार ट्राई कर लिया वो हमको तुरंत भेज दीजिए। जितना टाइम आप सोचने में लगाएंगे उससे ज्यादा अच्छा है कि आप कुछ गलती करें, है ना, वॉट एवर यूर अंडरस्टैंड, जो भी समझ में आ रहा है आपको। आइडेंटिफाई द फंक्शन पेरेंट चेन सबसे पहले यहाँ पे, है ना, पेरेंट चेन कौन सा है उतना कार्बन बना दीजिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको कहाँ लगाना, सेकंड कार्बन में, तो सेकंड कार्बन डबल बॉन्ड लगा दीजिए। कम ऑन गाइस, एटलीस्ट सेंड द स्ट्रक्चर ऑफ पेंट टू इन ना, पेंट टू इन का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो प्लीज भेजिए। somebody has sent me, Harsha. या वेरी गुड। नहीं, प्रोडक्ट सही नहीं है ना, देखिए जरा हर्षा, लुक एट दी प्रोडक्ट, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ना। पहला वाला सही है, दूसरा वाला देखिए जरा, कैन यू सी द मिस्टेक हर्षा? So one more carbon. यप करेक्ट, दैट्स इट। बस उसमें एक लाइन आप बढ़ा दीजिए, दैट विल बी इट। बाकी लोग भेजिए। आलिया, कैन यू सेंड द आंसर? Yes, sir. Wait a minute. व्हाट अबाउट यू सारा? 7 minutes. अच्छा, आप ऐसे करते हैं, यू आर नॉट कंफर्टेबल विद बॉन्ड लाइन आलिया? I am, but it's a big structure, no? So it will be easy for me to do like this. So अच्छा खैर, वॉट एवर इज इजी फॉर यू, दैट्स फाइन। ठीक है, but you have to concentrate on saving time. Can you I mean, without drawing the structures you cannot make the product, na, right Alia? yes, sir. Okay, sir. Sorry, no, I am saying that if I like pen to in में जैसे बहुत प्रैक्टिस करने के बाद मे बी ऐसा हो सकता है कि आपने स्ट्रक्चर नहीं भी बनाया, देन यू कैन इमेजिन द ओके फाइन, तो यहाँ पे मतलब सेकंड कार्बन, सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो एक एल्डिहाइड बनेगा दो कार्बन का, एक एल्डिहाइड बनेगा तीन कार्बन का। Yes, sir. You Yes, can sir. do That that I can do. Yes, sir. without even drawing the structures, you can make the product. Yes, sir. I can do that. हाँ, अच्छा fine, तब ठीक है, then that's fine, because I mean in NEET you'll have to save time। या तो Yes, आप sir. इमेजिनेशन में ही कर लें, या फिर आपको बॉन्डिंग सीखना पड़ेगा, बिकॉज Yes. बड़ा स्ट्रक्चर वैसे है नहीं है, ठीक है ना, दिस इज नॉट अ बिग स्ट्रक्चर। Yes, sir. Pentene was easy structure, but like second उसके one, बाद वाला भी सेकंड, अरे ये क्या बनाया, heptane. So, no. ये तो हमने सिखाया है नहीं सारा, आप लोग ये क्यों बना रहे हैं?
क्यों घर बना रहे हैं आप लोग? This is what I am taught at school. दिस इज नॉट द स्ट्रक्चर, बट ना ये तो स्ट्रक्चर है ही नहीं, ये तो इंटरमीडिएट बनता है। वो खूबसूरत लगता है, बस कोई काम नहीं है इसका। लेकिन ओके, अगर उन्होंने बोला ना रीड द स्ट्रक्चर, उन्होंने, ये तो इंटरमीडिएट बनता है, दैट इज वेरी अनस्टेबल। इतना अनस्टेबल कि पानी डालने से अगर कोई चीज रिएक्ट कर रहा है ना, तो सोचिए कितना अनस्टेबल है ना। यू आर जस्ट एडिंग वाटर, सो यू राइट द आईयूपैक नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय ओजोलिसिस। यहाँ पे आपको इस पे फोकस करना है कि आप प्रोडक्ट बनाइए पहले और उसका आईयूपैक नेम। ठीक है, Yes, sir. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, फाइन। इवन दो Yes, यू sir. नो दैट ओजोनाइट स्ट्रक्चर, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। देखिए पेन टू इन में सबसे पहले आपके पास यू विल हैव 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स, ठीक है, एंड डबल बॉन्ड इन द सेकंड कार्बन। यू ब्रेक दिस, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पे। So here you have 1 2 carbon atoms and double bond O, plus 1 2 3 carbon atoms and double bond 1 2 3 carbon atoms and double bond here, right? So this is 2 carbon atoms with the, here obviously you will have hydrogen. कितना यानी कि यहाँ पे 3 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, so obviously here you have hydrogen. So both of these are aldehyde. So this is ethanol and this is propanol. Now for the second structure even ना 3 4 dimethyl hep. देखिए सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए hep. This is what? This is the main, the parent carbon chain, 7 कार्बन का, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 4 5 हो गया, 6 7, राइट। अब यहाँ पे 3 4, सो 1 2 3 में एक मिथाइल ग्रुप, 4 में एक मिथाइल ग्रुप, फाइन। और फिर हेप्ट 3 इन, थर्ड कार्बन में डबल बॉन्ड, दैट्स इट। अब यहाँ पे आपको एक ऐसे ब्रेक करना है, ऑक्सीजन यहाँ पे और दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पे, एंड यू विल हैव 1 2 3 इधर डबल बॉन्ड O प्लस double bond over here, 1 2 like this, and this CH3 here. So basically आपको ऐसे काट के बस अलग अलग कर देना, like the number of times you draw the similar structure ना reactant के जैसा ही है बिल्कुल. Now both of these are ketone because this carbon atom does not have any hydrogen, it already has 4 bonds. So what type of ketone is this? This is 1 2 3 4. This is bute and 2-one, and this one is 1 2 3 4 5 carbon atoms, so it will be pent and 2-one. ठीक है, मेक सेंस आलिया? Yes, sir. Try, guys, try this third one. तीसरा करके भी तीसरा। सारा आई मीन आपके स्कूल में जो पढ़ाया है ना वो दैट इज इंटरमीडिएट, ठीक है ना। और उसके आगे का स्ट्रक्चर आपको शायद याद नहीं आ रहा है। उसके आगे उन लोगों ने ऐसे बताया होगा दैट कार्बन एटम्स आर लाइक दिस, इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन, ऐसे होता है, एंड दिस टू ब्रेक्स लाइक दिस, ठीक है। तो वो आप लोग को पढ़ाया नहीं गया, बट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ओजोनाइट का स्ट्रक्चर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट अगर आपके पास सवाल आ गया ना, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओजोलिसिस ऑफ इथीन, इस तरह से, तब वहां पे इंपॉर्टेंट होगा, अदरवाइज इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। सिद्दीका इज ऑल्सो हियर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीका। सिद्दीका, am I audible? व्हाट हैपेंड सिद्दीका, बहुत दिनों के बाद आप आए हैं क्लास में। ओके, यू आर बेटर नाउ।
दैट्स गुड। दावत खाए, दावत में क्या, दावत गए थे आप? तो दावत में ऐसा। ओ, ओके। स्ट्रक्चर सही नहीं बनाया आपने आलिया, द स्ट्रक्चर इज नॉट राइट। Okay, sir. इथाइल, आई होप यू नो व्हाट इज इथाइल ना। इथाइल में कितने कार्बन्स होते हैं? The हाँ two, आलिया, 2। two. और आपने कितना अटैच किया, आपने देखी जरा काउंट। Oh, it's three. Okay. ठीक है, मतलब ये पहले से बस उतना ही मिस्टेक है, नथिंग एल्स, है ना। Yes, sir. ज्यादा उसमें मिस्टेक नहीं है। वहां CH2 लिख लो यार, ऐसे क्या नाम है, हर्षा। वो ऐसे ऑक्सीजन को ऐसे आपने खाली छोड़ दिया, ऐसा लग रहा है बॉल कहीं भाग के जा रहा है। CH2 लिख Sir, दीजिए, CH2 है ना वहां पे। क्या, सॉरी। sir, it will be CH2. नहीं नहीं, नहीं नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड। दैट कार्बन एटम, ठीक है, द लास्ट टर्मिनल कार्बन, दैट इज हैविंग टू बॉन्ड्स, राइट? यू कैन सी दैट, हर्षा। Yes, yes, sir. Now, if it is having two bonds, that means how many hydrogens it will be having? Two. हाँ तो है ना, तो उस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, और उन दो हाइड्रोजन को तो कुछ नहीं होता है। मीन वट एवर ग्रुप इज अटैच्ड ऑन द कार्बन एटम, दैट इज नॉट इंटरफियर्ड विद, दे आर ओनली ब्रेकिंग द बॉन्ड एंड एडिंग देयर ऑक्सीजन, है ना, बस यही हो रहा है, राइट हर्षा? Yes. ठीक है, तो यू आर कॉन्फिडेंट नाउ ना कि CH2 होगा, समझ में आ गया आप? Yeah. So I thought it would be only aldehyde. हाँ, इट इज एल्डिहाइड ओनली, बट So I thought it would be मतलब only CHO. CHO नहीं नहीं, CH नहीं नहीं, CH2 मतलब कार्बन को चार बॉन्ड तो चाहिए ना। So now this is the last structure is 2 ethyl but 1 E। इसका देखिए, सबसे पहले आपको आना चाहिए the structure. So you'll have 1, 2, 3, 4 carbon atoms, but 1 E. That means the first carbon atom is having a double bond, and the second carbon is having a ethyl group. तो ethyl group में एक carbon और दो carbon, ठीक है? So we have made the structure. Now we are going to do ozonolysis here. See, I am not writing the reactants because उन्होंने बोला भाई कि ozonolysis होना है, and they are only asking me the IUPAC names of the product. I am focusing there. They are not giving asking me to write the reaction. ठीक है, तो पहले बट फिर बात है O3 एंड सेकंड में ZnH2, ठीक है। नाउ अगेन द सेम थिंग विल डू, विल ब्रेक द बॉन्ड हियर लाइक दिस, एंड दिस कार्बन एटम it will be what, CH2 plus the other one will be like this and double bond O. So this is 1 2 3 4, this is but and 2 on. Now Alia, you don't be sad, आपने जिस तरह से स्ट्रक्चर बनाया था, दैट्स आल्सो फाइन, मतलब कुछ गलत नहीं है उसमें, आपने इस तरह से बनाया होगा, राइट? करेक्ट आलिया? Yes, sir. हाँ, दिस इज आल्सो फाइन ना। अब यहाँ पे आपके पास, So no there no, will it be is one more carbon. हाँ, yeah, correct. This will be pent, not but. Bad. This will be pentane to one. Double bond O and CH2 double bond O. Right. So here you are also getting 1, 2, 3, 4, 5 carbon. That is pentane to one, and this is
ऑब्वियसली मीथेनल। एक और आंसर आया सारा का। पेंटेन, हाँ 3 ऑन होगा ना। हाँ पेज मूवी चेंज कर लीजिए जरा। पेंटेन 3 ऑन बिकॉज वी हैव एडेड वन कार्बन। यस सारा करेक्ट। सारा दिस वन। यस सारा। Yes, sir. दिस वन मेक सेंस ना। ये मीथेनल आपको समझ में आ रहा है, Yeah, सी yeah. एच टू डबल बॉन्ड हो है ना। वो सी Yes, एच sir. टू लिख दीजिएगा, ठीक है। ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे नहीं, मतलब वो ऐसे नहीं लिखा जाता, लेकिन ठीक है ना, यहाँ पे आप सी एच टू लिख दिया कीजिए, फाइन। अब मान लीजिए आपको अगर लिखना रहा है कि क्लोरो इथेन या फिर क्लोरोमीथेन, तो ऐसे एक बॉन्ड बना के सीएल नहीं लिख सकता कोई आदमी, ठीक है। दैट्स नॉट राइट। यू राइट हियर CH3Cl। ओके Yes, sir. है। नाउ दिस इज, एक चीज तो ये है, और दूसरी टाइप के जो सवाल आएंगे आपके पास ना, दैट विल बी, दे विल गिव यू द प्रोडक्ट, ठीक है। वो आपको प्रोडक्ट दे देंगे एंड दे विल आस्क यू व्हाट वुड बी द एल्कीन विच वुड गिव दिस प्रोडक्ट ऑन ओजोनोलिसिस। जैसे कि आपके पास एक सवाल है सीआरटी में, एक या 3 सवाल है इस तरह के, मैंने बोला हुआ है। An alkene A on ozonolysis give mixture of ethanol and pentane threone. Write the structure and IUPAC name of the alkene A, है ना। ये नाम का जो alkene है उसका स्ट्रक्चर और आईयूपैक नेम लिखना है, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, दिस इज आल्सो वेरी इजी, बहुत आसान है यहाँ पे भी। बट हाँ, अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपको आता है ना, तब बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है ये सारी चीजें। सो इथेनल, सो यू कैन मेक इथेनल, है ना। इथेनल कैसे बनेगा, यू विल मेक इट लाइक दिस, डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पे आप हाइड्रोजन लिख दीजिए। मेक सेंस, yes or no, please tell me guys। 2 कार्बन आइटम एंड CHO, ठीक है। अरे हाँ, है ना, कुछ तो बोलो। ठीक। अब पेंटेन 3 ऑन, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड O। मेक सेंस, yes or no, please tell me guys। Yes. Yes, sir. ठीक है। अब बस आपको क्या करना है, आपको इन दोनों स्ट्रक्चर्स को ना, देखिए जैसे ये दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, इसको ऐसे लिखना कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के सामने आ जाए, ठीक है। मतलब अभी तो हमने इसको ऐसे लिख दिया है, ऑब्वियसली आप लोग ऐसे मूव अराउंड तो नहीं कर सकते हैं। आपने देखा कि अच्छा ठीक है, इसका ऑक्सीजन ऊपर है, तो जिसका ऑक्सीजन ऊपर है उसको आपने नीचे रखा, और जिसका ऑक्सीजन नीचे है उसको आपने ऊपर रखा, इस तरह से। अब इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए और ऑक्सीजन को हटा दीजिएगा, ठीक है, लाइक दिस, डबल बॉन्ड। आसान है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, क्या करना है। आपने क्या किया बेसिकली, देखिए बिल्कुल बिल्कुल आपने क्या किया, ये ऑप्शन हटाया, ये ऑप्शन हटाया, और इन दोनों को कमेंट कर दिया। मेक सेंस, यस नो, प्लीज टेल मी। Yes, sir. हाँ जी बताएं। मीन वट एवर यू आर डूइंग ना इन द प्रीवियस केस, कि हम बॉन्ड को काट के ऑक्सीजन को डाल रहे थे, अब ऑक्सीजन हटा के बॉन्ड को ज्वाइन कर देना है ना, तो मेक यकीन, मेक सेंस, यस नो। आलिया, सारा, हाँ सारा, एनी प्रॉब्लम। No, sir. हो जाएगा। See. हम्म। हाँ बट इफ यू नो द बॉन्ड लाइन तब तो बहुत आसान है। But if you are going to write this whole thing, na, CH3, CH2, then you will be getting confused. But can you see that how intuitive it is if you know the bond line structure? अगर bond line structure आपको दिया हुआ है, तब कितना आसान हो जाता है, आपको समझ में आ रहा है, ये सोनो प्लीज टेल मी गाइस। Yes, sir. ठीक है, तो बॉन्ड लाइन पे फोकस की चीजें आप लोग के लिए, ठीक है ना। अब ये आपने कर लिया है, अब इसका आईयूपैक नेम तो आप लिखिएगा खुद से ही, है ना। यू विल सी दैट दिस स्ट्रक्चर, दिस पार्ट इज द मेन चेन। ये एक आपके पास, दिस इज द ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट, और एक डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो रिमूव दिस, डजेंट मैटर, आप इसको ऐसे हटा भी सकते हैं, इतना ही है आपके पास, ठीक है। चलिए राइट्स डाउन, और उसके बाद एक दूसरा सवाल हम दे रहे हैं, इसका बनाइए, वेरी सिमिलर, बहुत सिमिलर सवाल है।
So will the name be 3-methyl hex 2-ene? नेम Yes, sir. 1 2 3 4 5 5 ही कार्बन है भाई. Oh, sorry. Pent, sir. Pent ना. So and 3 methyl, right? Yes, sir. 3 methyl. Sorry, 3 ethyl, my bad, my bad. 3 ethyl. तो कार्बन है ना, 3 ethyl. Pent 2 ene. Okay, sir. No, that's डू यू गाइस हैव एनी प्लान्स फॉर मतलब न्यू ईयर के टाइम आप लोग ऐसे छुट्टी मारने कहीं जाते हैं क्या? इंडिया इंडिया कुछ इस तरह से होता है? टेल मी. सारा, सदीका एंड हर्षा. No, sir. नहीं. व्हाट अबाउट यू गाइस, सदीका एंड हर्षा? No, sir. सिद्धिका जाती है. सिद्धिका कहाँ जाइएगा आप? यस, सिद्धिका. Sorry, sir, I did not understand. I'm asking, like, when you get this Christmas holiday, na, Christmas, New Year holiday, winter vacation is also overlapping on that time. Do you guys go somewhere? Are you guys planning to go somewhere? Acha, you will be going to India. Will you be able to attend the classes in 3 4 days only? And when you will, okay, when will you come back? Acha, you will be attending the classes, no? Fine. ठीक है. Also, all of you will be having holidays from 26th of December till the 30th of December, right? 30th or 31st of December in school. ये 4 दिन. अच्छा, बताइए तो 26 से लेके 30 तक कितने दिन होते हैं? How many days from 26 to 30? हर्षा? 6, sir. 6 days, Including both the days. including. गिनिए जरा. 5. 5 days ना. हाँ, तो ये 5 दिन आप लोगों की छुट्टी रहेगी ना स्कूल में. Yeah, sir. It's usually more than that. हाँ, बट नहीं, मतलब एटलीस्ट सारे स्कूल में 5 दिन की तो छुट्टी रहेगी. ठीक है. सो दोस 5 days आई नीड डेली क्लासेस थोड़ा सा. Yes, Alia, you got disconnected, na? Yes, sir. See the 13.5 question. This question is saying an alkene A. अब यहाँ पे ना आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है. जैसे alkene का ओजोलिसिस कर रहे हैं and it is giving a mixture of ethanol and pentane 3O. So write the IUPAC name of A, structure and IUPAC name. ठीक है. So आप क्या कीजिएगा, आप पहले इथेनॉल बना लिया आपने 2 कार्बन का एल्डिहाइड, पेंटेन 3O तो 5 कार्बन, और उसके बाद आपने ये बना लिया ketone, right? And then you will orient them in a way that both the double bond oxygen are facing each other. देखिए जैसा हमने यहाँ पे बनाया. Can you see that, आलिया? Yes, sir. अब दोनों में से ऑक्सीजन को हटाना है. ठीक है. अब ये आपको इमेजिनेशन में करना पड़ेगा. आपने ऑक्सीजन हटा दिया
और इन दोनों को क्या करना है आपको, ऐसे नजदीक ले आना बस. So this is the alkene. Because if you remember in alkene what we used to do, we used to cut the bond and add oxygen. यहाँ पे उसका उल्टा करना है. You remove the oxygen and join the bond. Make sense, Alia? Yes, sir. ठीक है. चलिए. Please do this one then. 13.7. I'm waiting for your answer, guys. प्रोपेनल और पेंटेन थ्री मतलब बहुत सिमिलर ही है इससे जो हम लोगों ने अभी किया है. इट्स वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस. Looking at your answer, Harsha. 1, 2, 3. That's fine. चलेगा. The name that you have written is 1, 2, 3, 4, 5, 6. थर्ड कार्बन में है 1, 2, 3. थर्ड कार्बन में है 1, 2, 3. 4 इथाइल होगा आई थिंक. 1, 2, 3. 1, Yes, 2, sir. 3. नहीं नहीं नहीं, sorry, wait a second. Harsha, I'm looking at your answer. 1, 2, 3 इथाइल 3. हाँ नहीं, सही my bad. हाँ ठीक है, it's fine. And Sarah, looking at your answer now. 4 इथाइल. नहीं नहीं, आप हमको it's wrong, it's not right. नहीं, सही नहीं है. Sir, what is wrong? What is wrong? See the 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 है ना कार्बन एटम्स, तो आपने 5 क्यों लिया हुआ है? Why you have taken 5? Make sense? Yes, 1 minute. सारा पेंट नहीं होगा ना, it will be hex. Oh, yeah. Okay, 1 minute. ये आपने स्ट्रक्चर कैसे लिखा बताइए जरा. For me? हाँ हाँ सारा. 3s, 2s, 2s, double bond 3s. How did you नहीं? I'm asking what is the working? You have not shown any working ना. ऐसे आपको ऐसे वही तो नहीं आई होगी कि ये स्ट्रक्चर है, सीधा आंसर आ गया. आई एम आस्किंग द प्रोसेस. Uh, I have done this process. 1 minute. नहीं. हाँ तो ये आपको याद है ना, आप इस सवाल है ना, ये आपको बस याद थी चीज. ठीक है, तो ऐसे लेकिन अब जरूरी नहीं ना यही सवाल है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलिए एक और हम सवाल देते हैं. राइट. तो आपको क्या क्या मिल रहा है? यू आर गेटिंग ब्यूटेनल, है ना. ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन का एल्डिहाइड एंड प्रोपेन 2 ओन. इसका बनाइए.
These are the products that you have got from ozonolysis. आलिया, आपका ये आंसर नहीं आया अभी तक, प्रोपेनल एंड पेंटेन थ्रियोन का। Oh, yes, sir. ये दोनों स्ट्रक्चर आप पहले बनाइए, है ना, एंड देन ओरिएंट द डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Yes, sir. टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे। दोनों एक साथ भेज दूंगी, दोनों क्वेश्चन के। नहीं नहीं, इसको तो भेजिए, इसमें कुछ गलती हुई तो फिर Okay. बताएंगे ना। Yes, sir. इसमें Okay. गलती होगी। हाँ, डेटा बहुत कम है क्या आपके फोन में? हाँ आलिया, हर्षा has sent, just a second हर्षा। ब्यूट 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। और दोनों कोरिएंट किया आपने एक दूसरे के साथ में, दोनों ऑक्सीजन हटाया, 1 2 3 4, और डबल बॉन्ड, या वेरी गुड। सो स्टार्ट फ्रॉम हियर, 1 2 3 4 5 6, या वेरी गुड, करेक्ट, सही है। आलिया, कैन यू राइट द नेम? अच्छा, फिर आपने उसको सही से, अच्छा ठीक है, सही से लिख दिया फिर आपने ना, CH2 CH3 तो 3, हाँ ठीक है, करेक्ट। इज इट बेटर विद द बॉन्ड लाइन? उससे आपको जल्दी हो रही है या फिर देर हो जा रही है उससे? तो देर हो रही है। देर हो जा रही है? Yes, देन sir. हाउ, देर हो रही है? अच्छा, फिर नहीं तो फिर आप अपने हिसाब से कीजिए, इफ यू हैव नॉट प्रैक्टिस बॉन्ड लाइन तो फिर उसमें टाइम लगेगा आपको, आई अंडरस्टैंड दैट। वेटिंग फॉर सारा एंड आलिया फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आलिया, ये अगला वाला ना आप अपने हिसाब से कीजिए, जैसे भी आप करते हैं उसी तरह से कीजिए। Yes, sir. वेटिंग फॉर सारा। सिद्दीका तो खैर अभी अभी आई, आई डोंट नो व्हाट शी कैन डू।
That's fine, that's correct. मिथाइल, मिथाइल 1 2 and 1 2. हाँ सिद्धिका, that would work, not a problem सिद्धिका, it's fine, I understand. 6. इवन अगर आप क्लास में सही टाइम पे भी आ जाते ना, इफ यू ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम आल्सो, देन यू वुड हैव अंडरस्टूड. बट आपने लगभग आधे घंटे लेट भी ज्वाइन किया, दैट्स फाइन. बट इट्स फाइन, ठीक है, आप पुराने लेक्चर्स देखिएगा एंड देन ज्वाइन फ्रॉम द नेक्स्ट नेक्स्ट वीक. फाइन से, ठीक है. या ठीक है. सो लेट अस सी. So we have butanol, that means you have 1 2 3 4 carbon atoms, and this fourth carbon atom, it is having a double bond O. एक सेकंड, हर्षा ने क्या किया था? हाँ ठीक है हर्षा, इट्स फाइन. And then you have propane 2-on. Propane 2-on is double bond O like this, ठीक है. So what you can do, you can just see that आप इसको ओरिएंट कर सकते हैं इस तरह से. And when you are going to join both of this 1 2 3 4 double bond, और यहाँ पे 2 कार्बन होंगे. Now when we start numbering, the 1 2 3 4 5 6. So and here we are having a methyl group. So the name of this structure is going to be 2-methyl hex 2-ene. ठीक है. So if you are able to do this, ऐसे अगर आप कर पा रहे हैं ना सारा, then only it's helpful, नहीं तो आप कितना याद कीजिएगा. ठीक है. So you should know what is the structure of butanol, you should know what is the structure of propane 2-on, because IPAC nomenclature हमने कराया हुआ. If not, then you will have to rewatch those lectures or practice the question answers. ठीक है. चलिए. Yes, sir. Right, next, addition of water, fifth reaction. Now in water we know that water का आप structure देखिए तो hydrogen and then you have OH. So obviously this OH part will be delta negative because it is more electronegative, and this will be delta positive, right? So अब यहाँ पे obviously this is the negative part, and here the addition will take place as we have seen it took place in the case of hydrogen halide. If you have a double bond here like this, Markovnikov addition होता है. अच्छा अच्छा, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, वेट अ सेकंड गाइस, इसको हम थोड़ा बाद में देखते हैं. आई हैव टू राइट अ लाइन फॉर ओजोनोलिसिस ना, है ना. अगर आपको ओजोनोलिसिस बोल दिया गया कि ओजोनोलिसिस क्या होता है, तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, जस्ट अ सेकंड गाइस, है ना, एक लाइन बस लिख देते हैं. प्लीज राइट दिस विथ मी. व्हेन alkenes are treated with ozone, it forms ozonide, and on further hydrolysis and on further further treatment with zinc water, we get aldehydes and or ketones with lesser number of carbon atoms than alkyl. ठीक है. अब यहाँ पे ओजोनाइड का स्ट्रक्चर भी दिखा देते हैं आप लोग को. फॉर एग्जांपल ये हैव कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है. यहाँ पे कोई ग्रुप्स लगे हुए हैं. So most of the times they will ask you, if they ask ना, write a short note on ozonolysis of ethene. तो बस आपको यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड कर देना, ठीक है. जनरली वो हाइड्रोजन का ईथीन का ही पूछेंगे अगर आपको एग्जाम में पूछा है ना, बोर्ड मतलब 11th के एग्जाम में. सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रिएक्ट दिस विद ओजोन, दैट इज O3. अब क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहीं पे टूट जाता है, एंड यू हैव
this type of structure. ठीक है, यहाँ पे oxygen. Fine. This is O3. The groups which are attached to carbon atom, they're as it is. वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा होता. And then when you add zinc in the presence of water, breaking of bond take place like this. ठीक है. And when this type of bond breaks, so you can see that this carbon atom, it is having double, it is getting a oxygen atom. ये double bond O plus. अब ये carbon atom, it is having the two bond as it is, और यहाँ पे double bond O. ठीक है. Essentially क्या हो रहा है? This bond is breaking, एक oxygen इसको मिल रहा है और एक oxygen इसको मिल रहा है. Fine. Please write this down. Raise your hand once you're done, then I will start addition of H2O. Done. ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, दिस इज ओजोनाइड. Just waiting for Harsha. आपके स्कूल में हो गया ये चैप्टर हर्षा, या क्या चल रहा है? Yes, sir, done. डन. Yes, तो सारे चैप्टर्स हो गए फिर तो. yes, sir, done. स्कूल में क्या रिवीजन चल रहा है? Yes, sir. Okay. Fine. When you're adding H2O, this is usually done in the presence of an acid. So the more substituted one, ना, जिसकी ज्यादा डिग्री होती है, as it was the case of Markovnikov addition, and this is minor product. ठीक है, this is major and this is minor. So you usually have to remember the major product only. And when you have symmetrical alkene like this plus H2O, so even though you have two carbon atoms, अगर दोनों में से एक बार इसमें आप OH डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए, both of them are going to give you the same thing, है ना? ये दोनों एक ही प्रोडक्ट है. So obviously there is no question of major or minor if you have symmetrical alkene. ना, both of these are what? Both of these are cyclohexane जिसमें एक OH लगा हुआ है. So it will be cyclohexane all. You don't need to draw this, but if you have something like this, CH3 and OH here, है ना, जो यहाँ पे 3 डिग्री वाला है, that will be major. And major ही आपको बनाना रहेगा, ठीक है. जहाँ पे आप देखिएगा जनरली आपको CH3 as it is, and then OH here, this will be minor, and this is major. You will write hydration of alkene in the presence of acid gives alcohol via Markovnikov addition. Waiting for Sarah and Harsha. Okay. Next is oxidation.
नाउ इन ऑक्सीडेशन देयर आर दो रिएक्शन हम लोग को देखना है, एक तो इन द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 एंड देन वी विल हैव एसिडिक केस। ठीक है, तो पहला आपका यहाँ पे सबसे पहला वाला वी हैव कोल्ड dilute aqueous KMnO4. So obviously this is the mild this will be acting as a mild oxidizing agent, and this is also a reagent that is known as Bayer's reagent. Bayer's reagent. Now, what happens here? If you have any alkene, for example, you have CH2 double bond CH2, and you treat this with dilute aqueous KMnO4. Okay, then in that case, the CH2 single bond CH2, the double bond breaks, and each carbon atom gets a OH. ठीक है, तो the molecule which I have two hydroxy groups, no, OH, it has two hydroxy group, then it is known as dihydrate. और जब यहाँ पे आपके पास दो सामने कार्बन में, तो इसको हम बोलते हैं विसिनल डाई हाइड्रिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बट यू डोंट हैव टू मेमोराइज दिस। तो आपको ये समझना है कि एडजेसेंट कार्बन एटम्स में OH लग जाएगा। तो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव समथिंग लाइक दिस and then the same reagent, then you will have OH here and OH here. Make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है, अब एक चीज और समझिए जरा। Bayer's reagent is light violet pinkish in color, है ना? I will write pinkish, मतलब light violet type का तो pink ही हो जाएगा, pinkish in color, and on treatment alkene or alkyne, it loses its color. Therefore, it is used as a test for unsaturation. Used as a test for unsaturation, यानी कि वहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, पिंकिश कलर अपना लूज कर जाएगा। ठीक है, प्लीज राइट दिस डाउन, रेज योर हैंड वंस यू आर डन। So bromination is also used for the same thing, right? Yep, correct. Arsha, just waiting for you now. नेक्स्ट इज एसिडिक KMnO4, प्लीज राइट दी। एसिडिक KMnO4 भी यूज कर सकते हैं आप, और K2CH2O7 भी। एसिडिक KMnO4 और K2CR2O7। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, थोड़ा दिमाग को खोल के रखिएगा। पेन पेन छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना, पेन क्या कीजिए, पेन छोड़ दीजिए, बहुत फर्क पड़ता है उससे। यू लीव द पेन एंड देन प्लीज अंडरस्टैंड हियर। अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें ना, सो द कार्बन एटम विच इज हैविंग अ डबल बॉन्ड, तो वो कार्बन एटम तीन किस्म के हो सकते हैं। डबल बॉन्ड है कार्बन के पास, ठीक है, अब ये कार्बन के पास या तो दोनों हाइड्रोजन हो, दूसरा केस क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड है, कार्बन होगा ना एक, उसको छोड़ दीजिए, डबल बॉन्ड एक कार्बन को आपको देखना है, सिर्फ एक कार्बन को। इस कार्बन में क्या हो सकता है, या तो दोनों एल्काइल ग्रुप हो, आर आर। तीसरा क्या हो सकता है केस, डबल बॉन्ड कार्बन है, इस कार्बन में एक एल्काइल ग्रुप हो और दूसरा हाइड्रोजन।
नाउ दीज आर द ओनली 3 पॉसिबिलिटीज. क्या और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? टेल मी गाइस, सुनो, सोच के जरा बताइए, क्या और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? नहीं, आई होप यू कैन सी, नहीं हो सकती. ठीक है, अब यहां पे समझिए जरा. अगर यहाँ, इफ यू हैव दिस So फ्रैगमेंट, we don't consider functional groups. सॉरी, So we don't consider functional groups in R. ओ नहीं, हम लोग एल्कीन पढ़ रहे हैं ना, Okay, so yeah. है ना. एल्कीन में हाइड्रोकार्बन नहीं आएगा. ठीक है. सो हियर यू कैन सी, इफ यू हैव द CH2 ना, और यू आर यूजिंग एसिडिक KMnO4 और K2Cr2O7, तो ये फ्रैगमेंट कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में. ठीक है, CO2 में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कब बनेगा? इफ 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन को देखना है, एक एक कार्बन में फोकस कीजिएगा, दोनों कार्बन को एक साथ में देखिएगा. यू हैव टू फोकस ऑन वन कार्बन एंड द अदर कार्बन. नाउ इफ यू हैव, इफ अगर यहाँ पे 0 हाइड्रोजन है, देन इट इज गोइंग टू गिव यू गाइस कीटोन. ऑक्सीजन लग जाएगा इधर, कार्बन, और दोनों R ग्रुप ऐसे ही कैसे, बिल्कुल सेम, कुछ नहीं हो रहा इनका. इफ द कार्बन हैज 0 हाइड्रोजन, और अगर एक हाइड्रोजन होगा, देन इट विल गेट कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, एक हाइड्रोजन होगा तो कार्बन, द डबल बॉन्ड O लग गया, और इधर हाइड्रोजन के साथ भी OH आ जाएगा. दिस R ग्रुप विल बी एज इट इज. कब? जब इफ इट हैज 1 हाइड्रोजन. मेक सेंस? यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस. 2 हाइड्रोजन हुआ तो क्या मिलेगा? देन कार्बन डाइऑक्साइड. अगर 0 हाइड्रोजन मिला, देन इट विल बी कीटोन. और अगर एक हाइड्रोजन हुआ तो देन कार्बोक्सिलिक एसिड. बस फिर मैंने ये सुनो भी चलनी. Yes, sir. ठीक है, चलिए प्लीज लिखिए इसको जरा. आपको अगर लग रहा हो ना कि सर ये बाकी हाइड्रोजन का आ गया, तो आप ये भी लिख लीजिए, प्लस H2O भी लिख लीजिए आप. ठीक है, मन की तसल्ली के लिए. सर ये कार्बन का तो CO2 बना दिया आपने, हाइड्रोजन का क्या किया? तो उसका H2O भी लिख दीजिए. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, इससे मिलेगा आपको. ठीक है, रेज योर हैंड वंस यू डन. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ क्वेश्चन, CH3 होल ट्वाइस, कार्बन डबली बॉन्डेड विथ CH2. ठीक है, डबली बॉन्डेड विथ CH2. ध्यान से देखिए, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में 2 हैं आपके पास. एक ये कार्बन है पिंक, जो से हम अंडरलाइन किया, और दूसरा है, तो पिंक वाले में बताइए कितने हाइड्रोजन है? हाउ मेनी हाइड्रोजन इन द पिंक वन? बोलो भाई, पिंक वाले में कितना हाइड्रोजन है इसमें? 0. 0. तो इसका क्या बन जाएगा? टेल मी, पिंक वाले का क्या बन जाएगा? अरे, Return. 0 हाइड्रोजन, हाँ कीटोन ना. यू हैव कार्बन, इस पे 2 CH3 लगे थे ना, तो 2 CH3 को ऐसे रहने दीजिए. और जहां इस कार्बन पे डबल बॉन्ड था, तो इस पे वो लग जाएगा. और इसका क्या होगा? इट विल गिव यू CO2 और पानी. मेक सेंस? यस और नो, प्लीज टेल मी. बात समझ में आ रही है? सारा एंड आलिया, यू गॉट दिस? यस और नो, प्लीज टेल मी. Yes, sir. ठीक है, सेकंड, wait on the products.
आई होप यू रिमेंबर द रिएजेंट ना। यहाँ पे क्या आपके पास KMnO4 और H+, यानी कि एसिडिक KMnO4, K2Cr2O7 H+। यस हर्षा, जी हैव सेंट। दोनों में कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे एक दो कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं, आई थिंक इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन है हर्षा? 0, sir. 0 हाइड्रोजन ना, तो क्या बनेगा? Oh, okay, so yeah. Ketone. Here you will get 2 moles of CH3COOH, है ना? इससे भी वही बनेगा और इससे भी सेम चीज मिलेगी आपको, राइट? तो आपने सही बनाया, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आपके पास यू विल हैव 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर दीज 2 कार्बन एटम्स, और इन तीनों के लिए कीटोन। तो दैट्स इट फॉर टुडे, है ना? एंड बी मूविंग टुवर्ड्स दी नेक्स्ट। अच्छा, कुछ ना आप होमवर्क लिख लीजिए जरा। इसमें आपको 2 रिएक्शन अपने नोटबुक से करने हैं। पहला रिएक्शन है
addition of सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। एंड दूसरा है ओजोनोलिसिस। ओह माय गॉड, ओजोनोलिसिस हमने क्या, ये पॉलीमराइजेशन, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में देखिएगा। So I should do it and come. हाँ, बुक से, ठीक है। Yeah. ठीक है, बहुत, इट्स नॉट वेरी टफ, छोटे से हैं, ठीक है, उनको आप कर लीजिएगा। एंड देन is there anything else that we have? No. ठीक है, so in the next lecture we'll be starting with alkynes, okay?